Okay, next subtopic in northern blotting is reverse northern blotting. What is reverse northern blotting? As the name indicates, it is reverse to normal northern blotting. Before I start this, I would like to share with you that the procedure for reverse northern blot is same like we discussed with northern blotting. वो procedure क्या है? One by one, सबसे पहले उसी तरह हम जो RNA samples हैं टिश्यू से वो isolate करते हैं. So RNA samples they are treated, they are processed for the isolation of RNA. Then these RNA samples, then they are run on gel electrophoresis so that they separate on the basis of their size on the gel. When we apply proper current, then these RNA samples which are present on the gel, they are transferred to suitable membrane like nitrocellulose membrane. This is called blotting. So ये भी हम उसी तरह करते हैं. इसी तरह हम उस मेम्ब्रेन को जिसमें कि अब आरएनए सैंपल ट्रांसफर हो चुके हैं, अब उसको हम प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करते हैं. तो प्रोब इज एडेड. प्रोब हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या है. ये एक एंजाइम लेबल्ड या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड मटेरियल होता है विच हैज सेम सीक्वेंस ऑफ बेसिस विच इज प्रेजेंट इन द सैंपल ऑन मेम्ब्रेन. तो हम उसको मेम्ब्रेन में हम प्रोब ऐड करते हैं. Probe is hybridized with the membrane और इसके बाद हम एक्सेस जो सैंपल है, जो एक्सेस प्रोब होता है, उसको वॉश करते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड सिग्नल ना मिले, ताकि हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले. और इसके बाद हम उसको मेम्ब्रेन को हम एक्सपोज करते हैं और इस तरह से करके जो भी उसमें आरएनए सैंपल होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं. तो प्रोसीजर जैसे मैंने बताया जो हम पहले यूज कर चुके हैं वही है. इसमें जाहिर है एक चीज रिवर्स है जिसकी वजह से इसका नाम रिवर्स नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है. व्हाट इज दैट? इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA samples are present on the membrane, initially in the gel and then on the membrane. Here, the samples are present in the form of DNA molecule on the gel and in the membrane. While probe, which is used in normal northern blotting, the probe is RNA normally, but here the probe here, the used in normal northern blot is DNA. Well, here in reverse northern blotting, the probe is RNA. So that is why it is reverse to normal northern blot. I repeat, northern blot जो normal है उसमें RNA sample membrane पे मौजूद होता है और जो probe है वो normally DNA है. यहाँ रिवर्स नॉर्दर्न ब्लॉट में जो मेम्ब्रेन के ऊपर सैंपल है दैट इज DNA, while the probe which is used is normally RNA or it can be even DNA as well. So that is why we say it is one of the variant of northern blotting which is rarely used. Nucleic acids which are immobilized on a membrane are isolated DNA fragments rather than RNA molecules, like we discussed earlier on. And probe, which is radioactively labeled, it may be DNA or that may be RNA molecules. And it is, of course, labeled with the radioactive isotope or with enzyme conjugated, conjugated with enzymes, like we discussed, alkaline phosphatase or some other enzymes. And DNA microarrays, which has been used in previous years, that is similar to reverse northern blotting. And this reverse northern blotting is used to study expression of genes in the special tissues and is also possible to probe a large number of transcripts at one time. We study different genes in microarrays. So this is the difference between normal northern blotting and reverse northern blotting.